नमस्ते स्टूडेंट्स। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। आई एम विष्णु सामोत्या, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, जयोति विद्यापीठ, वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। प्रोग्राम फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड ट्राइमेस्टर, सेशन एनर्जी इन ट्रांजिस्ट एंड एनर्जी इन स्टोरेज। टुडे आई विल बी स्टार्ट एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू द वर्क. In thermodynamics, energy can be stored into two forms: energy in transit and energy in storage. First topic, now we start energy in transit. Work and heat interaction are form of energy in transit. Observe all the boundaries of a system. They are not property of a system. They are path function. Their magnitude depends upon the path of the systems followed during a change of state. Energy in storage. Energy in storage is internal energy. इट इज़ ए पॉइंट ऑफ स्टेट फंक्शन एंड हैंस ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। देखो एनर्जी इन स्टोरेज एनर्जी आर इंटरनल एनर्जी, बट एनर्जी इन ट्रांजिस्ट वर्क एंड हीट इंटरेक्शन एट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिस्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम। बाउंड्री और सिस्टम में एनर्जी का ट्रांजिस्ट होता है तो होती है एनर्जी ट्रांजिस्ट में, और एनर्जी स्टोरेज इज ए इंटरनल एनर्जी। क्लियर? The symbol E refers to a total energy storage in a system. Basically, there are two models in which energy may be storage in a system. That can be explained in a following diagram. Motion of a molecules, find mass, micros the in which energy may be storage. N is two types. Microscopic energy mode. The microscopic energy mode include the microscopic kinetic energy and potential energy of a system. Microscope energy are two types: microscope kinetics energy and microscope potential energy. Microscope kinetic energy consider a fold elements of a mass m having the mass velocity v is slow in a finger. The microscopic kinetic energy E of the fold elements by various of its motion is given by Ek. Kinetics energy of microscopic Ek is equal to m v2 का square upon 2. Microscopic potential energy. If the elements of the fold element from a duration that is z, then the microscopic potential energy EP by the variance of the potential energy is given by EP is equal to mgz, where g is equal to echo electron due to the gravity. Electron due to the gravity. Microscopeless energy mode. If refers to the energy storage in a molecule and atoms structure of the system, which is called the molecule. Internal energy or internal energy denoted by U. Matter is dependent of a molecules. Molecules are is random thermal motion for a gas with some average velocity versus continuously conducting with the each other of the walls as a showing finger. Due to the collisions, the molecules may be subjected rotation as well as vibration. There can be transition kinetics energy, rotational transition energy, vibrational transition energy, electronic transition energy, and chemical transition energy, and nuclear transition energy is respect to the energy of the molecule. Then the E is equal to E transition energy plus E rotation energy plus E vibration energy plus E chemical energy plus E electronic energy plus E nuclear energy. That can be following diagram in explain kinetic energy, electrical energy, rotational energy, vibrational energy, and nuclear energy. If n is the total number of molecules is the number of systems, that total internal energy is given by U is equal to Ne. In the ideal gas,
there are no intermediate force of attraction and repulsion, and due to the internal energy depends only one temperature, thus U is equal to Ft. Okay, so for ideal gas system, on others for energy which can be presented by the system, and magnetic energy, electrical energy, surface tension energy is absence of the is absence of these, the total energy E of a system is given by E is equal to E microscopy, E macroscopy plus E microscopy. क्लियर, तो ई मैक्रोस्कोपी प्लस ई माइक्रोस्कोपी, तो ई मैक्रोस्कोपी में कौन सी आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ई मैक्रोस्कोपिक में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ई माइक्रो में इंटरनल एनर्जी. क्लियर, तो ई टोटल एनर्जी इक्वल टू ई माइक्रो एंड प्लस ई मैक्रो, तो ई माइक्रो में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी. इन एब्सेंस ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी के इक्वल टू जीरो, तो के पी इक्वल टू जीरो, तो ई इक्वल टू यू. In motion of gravity, in the presence of gravity, potential energy is equal to 0 and kinetic energy is equal to 0, so total energy E is equal to U, so total energy is equal to internal energy. For the first law of thermodynamics, del Q is equal to del E plus W, where Q is equal to heat formation, heat transfer, maybe work is equal to work transfer. Since E is equal to U, so first law of thermodynamics reduced to del Q is equal to del U plus W. Clear? U is a extensive properties of a system and specific internal. U by M is a intensive. Equation first and second is differential for can be written as dq is equal to de plus dw plus dq is equal to du plus dw, where integration of du and dw considering the different form of works transfer which may be present when only pdv work is present. The equation 3 and 4 becomes dq बराबर de plus pw, dq बराबर du plus pw. ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग q इक्वल टू डेल ई इंटीग्रेशन पी डी बी और डेल क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी बी. तो एक्सप्लेन ऑफ द ट्रांजिशन एनर्जी एंड स्टोरेज एनर्जी ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. क्लियर, तो मैक्रोस्कोपिक में क्या क्या आती है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक में आती है काइनेटिक्स एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और माइक्रोस्कोपिक में आती है ओनली इंटरनल एनर्जी इन द स्टोरेज एंड ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन. ओके, तो ये हो गई अपने पास ट्रांजिस्ट एनर्जी एंड स्टोरेज एनर्जी.